Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 6 February 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article of the day is about the PM-KUSUM scheme. Now this is going to be really important because it's a very important scheme of the union government. तो यहाँ पे basically जो ये PM-KUSUM scheme है, it is mostly associated with the generation of or production of renewable energy or to be specific production of solar energy, ठीक है, at the rural areas में. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. Now this is not a new scheme, but recently it has been in the news because the Ministry of New and Renewable Energy, who operates or who is responsible for carrying out this particular scheme, now it's extended the deadline to install 30,000 megawatt solar power project capacity in the rural India to March 2026. ठीक है, तो यहाँ पे जो deadline है, it has been extended under the PM-KUSUM scheme. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. It can be important for prelims and also from mains. It can be important from GS paper to government policies point of view. It has been taken from the Hindu. So we'll first talk about the PM-KUSUM scheme के बारे में. तो ये जो scheme है, it was launched by the MNRE in 2019. So MNRE stands for Ministry of New and Renewable Energy. तो ये जो ministry है, it had launched in 2019 में इसे launch किया था in order to ensure installation of off-grid solar pumps in rural areas. तो यहाँ पे जो primary objective है, it is to install off-grid solar pumps in the rural areas and also reduce dependence on grid in grid-connected areas. तो जो भी हम depend करते हैं, जो भी आप देखोगे, जो agriculture के लिए जो farmers depend करना पड़ता है on the conventional source of energy, अब उसी को replace करके यहाँ पे we are trying to bring about or install the off-grid solar pump. देखिए, now these are not the regular pumps, these are you can say these are off-grid solar pumps which will be used in the rural areas for purpose of agriculture. Now if we talk about the components of the particular PM-KUSUM के बारे में, so there are three main components of the PM-KUSUM. तो पहला हो गया 10,000 megawatt of decentralized ground mounted grid connected renewable power plants. ठीक है, तो normally हम यहाँ पे जिस कन्वेंशनल सोर्स पे डिपेंड करते हैं ना, उसी को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे लाया जाएगा 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स. द सेकंड वन इज इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप. तो जैसे कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर पंप दैट इज अ सोलर पंप. तो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स इन द रूरल एरियाज एंड ऑल्सो कन्वर्टिंग 15 लाख एग्रीकल्चर पंप. तो करेंटली यहाँ पर जो 15 लाख जो आप कह सकते हो कि जो भी हम एग्रीकल्चर पंप हम यूज करते हैं, अब उसी को कन्वर्ट करेंगे ऑलरेडी कनेक्टेड टू द ग्रिड इनटू सोलर में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो 20 लाख द न्यू सोलर पंप्स विल बी इंस्टॉल एंड आल्सो 15 जो एक्जिस्टिंग एग्रीकल्चर पंप उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू सोलर में. एंड इफ यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव, सो इट एम्स टू enable farmers to set up solar power generation capacity on their arid lands and to sell it to the grid. ठीक है, तो फार्मर्स, अब मान लीजिए कि फार्मर बेसिकली होल्ड सम लैंड जहाँ पे वो क्रॉप्स नहीं उगाते, जहाँ पे वो कल्टिवेट नहीं करते, तो दोज एरिड लैंड्स और दोज इनफर्टाइल लैंड्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर प्रोजेक्ट. तो इससे क्या होगा, तो फार्मर का जो रिक्वायरमेंट है, फार्मर का जो इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो ही विल बी एबल टू मीट हिज ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो जो एक्सेस वो अपना लैंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द यूज ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, विद द यूज ऑफ सच सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो वो जो सरप्लस होगा तो he will also be able to sell it off. तो उससे क्या हो जाएगा, he will have a sustainable or you can say he will be able to enhance his income or his livelihood. So it also seeks to increase the income of farmers. तो जितना excess है उसे sell करके by allowing them to sell surplus solar power to the grid. So this is how this PM-KUSUM scheme was planned. So last year, the MNRE, that is the Ministry of New and Renewable Energy, now they had published about their achievement, about the current status of the PM-KUSUM. तो उन्होंने बताया है that over 1 lakh standalone solar pump installed under the PM-KUSUM scheme. तो जैसे मैंने बताया था about the target of 20 lakh solar pumps. So out of that, like over 1 lakh has already been installed. ठीक है, so over 1.16 lakh standalone solar pump have been installed under the PM-KUSUM scheme. ठीक है, तो ये हुआ था till the mid 2022. ऑब्वियसली यहाँ पे जो मिशन है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, इट इज स्टिल ऑनगोइंग. और यहाँ पे टिल दिस डेट यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है जिस स्टेट में, दिस राजस्थान. ठीक है, तो राजस्थान स्टैंड्स इन नंबर 1 बिकॉज आपको पता है कि राजस्थान में एनर्जी काफी ज्यादा है, सोलर एनर्जी, प्लस आपको पता होगा कि राजस्थान में द एक्सटेंट ऑफ एरिड लैंड इज ऑल्सो हाई. ठीक है, सो राजस्थान, देन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. So these are the top performing states with regard to the PM-KUSUM, and also over 2.5 lakh solar pumps are already they are in different stages of installation. So 1.16 lakh have been installed and 2.5 lakh they are already in the process of installation. So if we look at the significance of this scheme,
तो आपको पता होगा कि जो रूरल एरियाज है दे ऑफन फेस स्कैर्सिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज, है कि नहीं? तो ये जो पार्टिकुलर स्कीम है, इट विल ब्रिंग लाइक एन इंक्रीज एक्सेस टू द एनर्जी सोर्सेज. सो इट विल इंसेंटिवाइज द फार्मर्स टू सेल सरप्लस सोलर पावर और सोलर एनर्जी टू द स्टेट्स, व्हिच इन टर्न विल ऑगमेंट देयर इनकम. ठीक है, तो इनका जो इनकम होगा, तो इनकम में दे विल बी हैविंग अ प्रोग्रेस ऑफ द इनकम, बिकॉज बाय सेलिंग ऑफ द एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस सोलर एनर्जी है, दे वुड बी एबल टू सेल इट टू द ग्रिड. द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, बिकॉज द रूरल एरियाज में आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन होता है, एग्रीकल्चर ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द इरिगेशन पर्पज, बिकॉज ऑफ द पंप के वजह से. ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे इट इज गोइंग टू increase the access to electricity in rural areas and also provide a reliable source of energy for agriculture and other rural activities. Also, it is going to contain the climate catastrophe. So, expansion अगर हम मान लीजिए कि जो irrigation, if we have solar energy, तो उससे हम क्या कर पाएंगे? We'll be able to have the constant source of water as well. So, expansion of the irrigation cover by providing decentralized solar बेस्ड इरिगेशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम द पोल्यूटिंग डीजल. तो नॉर्मली अभी के टाइम में, या आप कह सकते हो जो कन्वेंशनल वे है इरिगेशन के लिए, जो पंप्स होते हैं उसमें डीजल यूज करते हैं. तो डीजल एक तरीके से वो जो एनवायरनमेंट है उससे पोल्यूट करता है बाय कार्बन एमिशन. ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे दिस पर्टिकुलर सोलर पंप विल एक्चुअली बी हेल्पफुल फॉर सेविंग द क्लाइमेट एज वेल. एंड व्हेन इंप्लीमेंटेड फुल्ली द PM-KUSUM विल लीड टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय एज मच एज. तो जब ये फुल्ली व्हेन इट विल इंप्लीमेंटेड, तो 32 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम कैन बी, आप कह सकते हो, इट बी रिड्यूस. ठीक है, जो एमिशन है इट कैन बी रिड्यूस ओनली बाय द यूज ऑफ सच द कंपोनेंट्स ऑफ द PM-KUSUM. And also, अगर मान लीजिए कि if we are installing new solar pumps, तो definitely it would require management as well. It would require the maintenance as well. तो यहाँ पे installation में maintenance के लिए we would also require the workforce. तो ये जो workforce है we will be able to have from the rural areas again. तो the rural youth जो है, तो उनके लिए भी ये particular जो scheme है, it is going to bring about employment to their lives. So it is going to bring about employment and empowerment. The scheme is expected to create job opportunities in the installation में, maintenance में, and operation of the solar project. Of the solar power project. The scheme is expected to empower rural communities by giving them control over their own energy generation and distribution. But obvious सा बात है, there are number of challenges as well. तो challenges का अगर हम बात करेंगे, तो पहला challenge आप देखिए, हम बात कर रहे हैं about the installation of solar power in arid land. But इसके लिए जो यहाँ पे solar panels होते हैं, it cost a lot, है कि नहीं? तो the first challenge we can talk about is the financial and the logistic issue. देखिए, the cost of setting up the solar power project, it can be quite high if it is not incentivized by the government. Government मान लीजिए if it is paying subsidies, then it is fine, but otherwise it is going to be quite cost consuming, and also some farmers may not have the access to the necessary financing. तो while pumps are not a challenge for domestic supplier, the availability यहाँ पे जो बताया गया about the solar pump, तो solar pump में भी कितना available होगा, this can also act as a challenge for the implementation of this particular scheme. And also one of the very important aspect, or you can say a challenge for this scheme is that, अब देखिए अगर मान लीजिए कि फार्मर ने यहाँ पे जो भी सोलर पैनल है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, और सोलर पैनल से मान लीजिए कि ही हैज गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ, जो वो सेल भी कर रहा है अपने पास भी है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पंप यूसेज करता है ना, पंप यूसेज इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट मैनर. बिकॉज पहले वो क्या कर रहा था, पहले वो लिमिटेड यूज कर रहा था एनर्जी का. व्हाई? बिकॉज ही वाज रिक्वायर्ड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब क्योंकि उसका ओन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑब्वियस सा बात है, ही विल बी यूजिंग मोर एंड मोर ये जो इलेक्ट्रिसिटी पंप होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, देयर इज अ चांस ऑफ द वाटर टेबल बीइंग डिप्लीटेड. ठीक है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टेंटली इफ द वाटर, इफ द ग्राउंड water has been extracted from the surface, तो उससे क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर जो रिजर्वर है, it can also like pose a threat to that particular reservoir, because a farmer may have a tendency of extracting more and more water for his farm purposes. इस टॉपिक के बेसिस पर एक बिलिंग्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट an international organization known as OECD, that stands for Organization for Economic Cooperation and Development. The news basically says the Gujarat government recently signed an agreement with the OECD to conduct the program for international student assessment test for the students of government school. अब ये न्यूज़ जो है ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये न्यूज़ अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैक्स टू मैक्स बस ये पूछा जाएगा कि which state has signed an MOU or which state has signed an agreement, बस इतने पूछा जाएगा for prelims. But through this article, I have taken out this article to learn about the functioning of the OECD, which is a very important organization for the global economy. ठीक है, तो this can be important for our prelims, for mains it can be important from GS paper international relations point of view. It has been taken from the Indian Express.
So we'll learn about the OECD with the help of this article. So the OECD जो है, it is, as I told you, it stands for Organization for Economic Cooperation and Development. तो पहला बात यहाँ पे सिंपली आप बस ऐसे याद कर सकते हैं कि जो OECD है ना, it is about a group of the top economies of the world. ठीक है, जो आप कह सकते हो कि जहाँ पे वो सारे कंट्रीज आपको यहाँ पे मिलेगा which have got high human development index, यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स रहता है ना, तो वो सारे कंट्रीज मिलके फॉर्म करते हैं दिस पर्टिकुलर ग्रुप. सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे 38 कंट्रीज मिलेगा. दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट. 38 कंट्रीज which are committed to democracy and the market economy. ठीक है. So OECD members जो है, they are typically democratic countries that support free market economies. ठीक है, तो जो free market economies जो countries support करते हैं ना, so those particular countries they have formed this group called the OECD. Now very important, OECD जो है ये फाउंड किया गया था 30 सितंबर 1961 में. देर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है 1961. लेकिन अभी देखिए ये जो OECD है ना, OECD इज एक्चुअली सक्सेसर टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले ही यहाँ पे था OEEC. ठीक है, OECD 1961 में आया है, बट 1948 में फॉर्म हुआ था OEEC. ठीक है, अब OEEC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो एज द नेम सजेस्ट, बिफोर 1961, दैट इज फ्रॉम 1948, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द OEEC, यहाँ पे इट वाज लिमिटेड ओनली टू द यूरोपियन कंट्रीज, बट open up the membership to different countries of the world. तो यहाँ पे OECD कर दिया गया था. स्पेशली यहाँ पे 1961 में ये जो कंट्रीज है, दिस कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे 18 यूरोपियन नेशंस था who were already a member of the OEEC. ठीक है, but now to open up the membership for countries like USA and Canada, because देखिए USA and Canada they are not European countries, they are American countries, right? तो ये जो USA and US and Canada को यहाँ पे एंट्री देने के लिए the particular OECD फॉर्म किया गया था. ठीक है, so OEEC was 1948 and OEC को यहाँ पे रिप्लेस करके the OECD has come into function in 1961. ये important है. Alright, if we talk about the headquarters is at Paris in France. The stated goal for the organization for the OECD का हम बात करेंगे गोल के बारे में, it is to shape policies that foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. ठीक है, the OECD publishes economic report publish करता है basically about the state of the economies of the world and also about the statistical databases, analysis and forecast on the outlook for economic growth worldwide. Even you will find India के लिए भी वो they make forecasting कि India is in the next financial year they are going to grow by this particular percentage. ठीक है, तो recently उन्होंने publish किया था I think 6.8% जैसा they predicted. ठीक है, so this particular जो reports होते हैं is published by the OECD. The organization also seeks to eliminate bribery and other financial crime worldwide, because माना जाता है कि this particular things are not beneficial for the global economy, and the OECD also maintains a so-called blacklist. ठीक है, तो blacklist maintain करता है of nations that are considered uncooperative tax haven. तो ऐसे countries जो मान लीजिए जो कोई कंपनी को टैक्स बेनिफिट देता है, जो बताता है कि हमारे यहाँ पे आप अपना जो हेडक्वार्टर्स है, ओपन अप द हेडक्वार्टर्स एंड विल गिव यू बेसिकली टैक्स जो भी बेनिफिट है वो हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, यू विल फाइंड नंबर ऑफ कंट्रीज हैव गॉट दिस ऑप्शन ऑफ गिविंग लाइक. अब यहाँ पे देखोगे कि कुछ यहाँ पे कंपनीज है, जो कंपनीज फॉरेन रहता है, सपोज मान लीजिए इंडिया की कंपनी, वो जाके खोल देगा एक ऑफिस कोई ऐसा कंट्री में जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम रहता है. तो उन जो ये कंट्रीज है, नाउ दोस पर्टिकुलर कंट्रीज विल बी प्लेस्ड इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ द नेशंस. And India, you should know, very important. आप मन में मे बी यहाँ पे द क्वेश्चन में स्ट्राइक, तो यहाँ पे इंडिया यू शुड नो इज नॉट अ मेंबर ऑफ द OECD. ठीक है, सो इंडिया इज वन ऑफ द many non-member economies है with which the OECD के साथ रिलेशन तो है, OECD के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी हम साइन करते हैं, बट इट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द OECD. So this is the list of the OECD countries. So you can go through the list. You don't need to remember all the 38 names. Definitely, you will not be asked about it. But then again, you should know that India is not a member. And also, if you look at this map, you will find majorly यहाँ पे जो ये grouping had started by European countries. So hence, you will find almost all the European countries are a part of this OECD. And then you will look at the North American countries as well. They're also a part of the OECD grouping. Australia, you can say, is also a part. And New Zealand here is a part of the OECD. And also, you'll find Japan is a member of the OECD countries as well. And if you look at the South American
southern part, you'll find the countries like Chile and Colombia. ठीक है, so these are the members of the OECD countries, right? एक बार देख लीजिएगा. And also these are the reports that are published by the OECD, that is the economic outlook, then OECD communication outlook, internet economy outlook, and जो ये यहाँ पे news था, the news was basically about the performance for international student assessment. ठीक है, तो ये बहुत important है, it can be asked in your examination. So these are basically the reports that are published by the OECD. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, kindly answer in the comment section. The next article is about amendment in the civil service upward age rule. ठीक है, तो सिविल सर्विस में एंट्री के लिए जो एज था उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे. बिकॉज द कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड दिस अमेंडमेंट. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट दो, मेंस के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी APPSC फियास्को के बारे में. तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं. बिकॉज ऐसा माना जाता है, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इफ इट गेट्स टू लॉन्ग देन अ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर कह सकते हो ऑफ देयर हायर एज, नाउ दे मे लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. तो इसी के लिए उनको जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है उसे प्रोवाइड किया गया है. So the state cabinet, it approved the amendments in Rule 3 of the Arunachal Civil Services and Civil Post Rules. तो यहाँ पे जो amendment है, it is basically decided that the upper age limit for the state civil service examination will be 35 years for the general candidates. That is the non-APSC candidate के लिए it will be 35 years, and for the APSC candidate it will be 40 years. Okay, so these years are important. So now any person, any aspirant who is till the age of 40, if provided he or she is an APSC candidate, will be able to sit for the examination. The proposed upward age limit shall also be applicable as a one-time relaxation to all those candidates. तो जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ऑफ सर्टेन, अब माना जाता है कि लाइक अ नंबर ऑफ एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड, लाइक इन नंबर ऑफ एग्जाम हैव बीन डेफर्ड, हैव बीन पोस्टपोन्ड. तो ऐसे केस में इफ एनी एस्पिरेंट हैज ऑलरेडी like lost the upper age limit, then also he or she will be provided the one-time relaxation. So with a vision to make Arunachal Pradesh a sporting powerhouse, the cabinet approved the creation of 30 new posts. ठीक है, तो sports in the youth affairs department में 30 new posts will be coming, and I believe this post will be added in the upcoming जो भी यहाँ पे APPSC जो होता है तो उसमें आई थिंक दिस पोस्ट विल बी एडेड. लेट्स लुक. तो यहाँ पे देखिए इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेकंड अबाउट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेयर द गवर्नर हैज एक्सटेंडेड द ग्रीटिंग्स फॉर बोरी बूट. अब यहाँ पे द गवर्नर BD मिश्रा हैज एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ बोरी बूट फेस्टिवल ऑफ द डिशी कम्युनिटी. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. दिस फेस्टिवल्स आर ऑफन आस्क्ड कि व्हिच पर्टिकुलर कम्युनिटी सेलिब्रेट्स दिस festival. So it can be important for our prelims, and from mains it can be important from GS paper and cultural point of view. You know, Arunachal is so diverse in nature. So about the cultural diversity के बारे में you can be asked to write a question, you can be asked to write an answer, और मान लीजिए an essay as well. ठीक है, so it has been taken from the Arunachal Times. So about this particular Boori Boot festival, it is a 4-night long festival celebrated exclusively by the Nishi tribes in Arunachal Pradesh. So Boori Boot, it means getting together to welcome the spring and successful harvest. ठीक है, so it is mostly a harvest festival. It is believed that the festival evokes the spirit of Boori Boot, who will bless them with all the happiness and free from every kind of disease. ठीक है, एक स्पेशल पूजा कराया जाता है by the priest, that is Nibu, followed by an animal sacrifice for the mankind to be blessed with the prosperity and be free from diseases. Another aspect of the festival अगर आप देखेंगे, it also apply etching. Now etching is nothing but the flour on the face and the body, right? So इसी टॉपिक के बेसिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, kindly answer in the comment section. And I believe कि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए निरीजोली में the Bollywood star, that is Arjun Rampal, is also present in Arunachal Pradesh currently. तो ये सारा क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था in the previous video. Let's look at the answer. So the answer are, so recently I've covered the article about the International Year of Millet. So this has been done under the recommendation of India, and the Global Financial Stability Report is prepared by the International Monetary Fund. These are some more questions that I asked in the previous video. Let's look at the answer. So rapid financing instrument and rapid credit facility, this was actually asked in the UPSC. Now this is again related to the International Monetary Fund only. Gold tranche, that reserve tranche refers to a credit system granted by IMF to its member. This was again asked in the UPSC. Now, which of the following communities celebrate the Ray Festival? It is EduMiles tribe. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.